Allied Education videos. My name is Ankit Patel and today we are going to study about Standard 11 biomolecules, right? In this chapter we have completed about a general introduction of biomolecules and we have also completed how to separate this different type of biomolecules, right? We have separated macromolecules and micromolecules among all organic compounds as well as we know that there are several more techniques to separate out or purify a particular chemical from pool of organic compounds, right? Whether it is pool of filtrate or it is retentate. Again, in both of these fractions there are various different type of compounds, right? And from them we can purify any one of the compound depending on what type of physical and chemical properties they are having, right? And those separation techniques are chromatography. There are several types of chromatography, electrophoresis and so on, right? Many processes are there through which we can separate different type of chemicals, we can purify different type of chemicals from this group of organic compounds, right? Now, in our book, monosaccharides are given separately, polysaccharides are given separately, amino acids are given separately, proteins are given separately, but we will study these compounds according to carbohydrate, protein, then nucleic acids and lipids, right? We will classify these compounds depending on what kind of chemicals they are, whether it is belonging to carbohydrate or they belongs to proteins, and in proteins we will study about amino acids as well, whether the compound belongs to nucleic acids. Again, in nucleic acids we will study about the monomeric unit as well, and fat molecules, right? We will separate these four molecules, we will study these four molecules separately, right? Today we are going to study about carbohydrates, in which we will study about monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Among monosaccharides there are several different type of compounds depending on how many carbon they are having, right? If they are having 3 carbons, then these monosaccharides are called triose. These monosaccharides are called triose. First of all, I should describe what is monosaccharides. Monosaccharides are those type of carbohydrates which are having only one monomeric unit, right? That's why they are called monosaccharides. Monosaccharides means having only one monomeric unit. Disaccharides means having only 2 monomeric unit. Oligosaccharides means having monomeric unit not more than 10. Understood? So that kind of compound are called oligosaccharides, and those compounds which are having 100 to 1000 different 100 to 1000 monomeric units or repeating units, this kind of compounds are called, this kind of carbohydrates are called polysaccharides, right? So let's study about first monosaccharides. Again, as I have told you already, that monosaccharides can be of different types depending on number of carbon present in each monomeric unit, right? Each type of monosaccharide is having only one monomeric unit. How many the carbon atoms are present in it, depending on that we have classified this monosaccharides, right? Like triose, pentose, hexose and so on. Triose means those carbohydrates which are having 3 carbon atoms in their molecule, right? In their molecule they are having 3 carbon atoms. Pentose means 5 carbon and hexose means 6 carbon, right? So let's study about first triose type of monosaccharide. In all the type of monosaccharide, whether they are triose or tetrose, pentose, hexose, dextrose, whatever they are, all of them are classified again into 2 groups, right? One is aldopentose, among triose, aldotriose, ketotriose, among pentose, aldopentose, ketopentose, among hexose, aldohexose, ketohexose. So either they have aldehyde group or they have keto group, right? Now ketone group, Now this aldehyde and ketone are not much different, right? They are different in that way, in the way that where double bond oxygen is present, right? Double bond O is present, right? If double bond O is present at the terminal carbon, then that kind of compounds are called as aldehyde. That functional group is called aldehyde. And if double bond O is present at the non-terminal carbon, if this double bond O is present in non-terminal carbon, then that kind of organic compound is ketone type of compound, right? So for me there is no difference between aldehyde and ketone, but the difference only is
whether it is present in terminal carbon or it is present in non-terminal carbon, right? Double bond O, whether it is present in terminal carbon or it is present in non-terminal carbon. Depending on it, they are classified into aldehyde or ketone. Understood? So let's study about triose first. So there is two type of triose. Whether it can have aldehyde group or ketone group, right? Whether the double bond O is present at the terminal carbon or it is present at non-terminal carbon, right? If it is present at terminal carbon, then it is called aldotriose, and its common name is glyceraldehyde. Its common name is glyceraldehyde. You can see that double bond O is present at the terminal carbon, right? We generally write this aldehyde group as CHO. That means C is having single bond with H and double bond with O. Understood? CHO means C is having single bond with H and two bonds with O. So that kind of group is called aldehyde group. So it is also commonly it is called as glyceraldehyde. And there is one more organic compound which is called dihydroxyacetone, right? This is also a ketotriose. So this is about triose, different type of triose, that is aldotriose and ketotriose, right? Both of these molecules have their own function. You must have seen advertisement of Encyclopedia and Bonvita in which DHA kind of sphere is also included in this Encyclopedia, that this DHA is nothing but dihydroxyacetone. Now why dihydroxyacetone is called so? Because in all the carbohydrates, in all the monosaccharides, not in all carbohydrates but in all monosaccharides, except the carbon having double bond O, all other carbons are having hydroxyl group, OH group. You can find it here, right? In glyceraldehyde, the two carbons which are not having double bond O are having hydroxyl group, right? They are having OH group, right? And in dihydroxyacetone also there is two OH group. There are 3 carbon atoms in total. One carbon is having double bond O and another carbon is having OH group, right? So 2 carbon are having OH group, that's why it is called, here 2 hydroxyl group is there, that's why it is called dihydroxy. And if you observe this carbon this compound very carefully, if we take out this double bond O, it is nothing. If we omit out OH group, then they are nothing. Then this molecule is nothing but acetone, right? Which is having double bond O at the second carbon, right? It is here carbon double bond O is not there at the terminal carbon, but it is present at the second carbon, right? So it is acetone or propanone, whatever you say. It is called dihydroxyacetone. It is an acetone which is having 2 hydroxyl group, right? 2 times hydroxyl group. That's why it is also called as dihydroxyacetone. So likewise two type of triose are there. Coming to the next one is pentose. Pentose are also like every other monosaccharide. Pentose is also of 2 types, that is aldopentose and ketopentose, right? Aldopentose is that type of pentose which is having double bond O at its terminal carbon. That means it is aldehyde group. And ketopentose is that type of pentose which is having double bond O at second carbon, right? At the second carbon. Understood? So that is how there are 2 type of pentose, aldopentose and ketopentose. Aldopentose have another name ribose. Its common name is ribose. And ketopentose have common name ribulose. Understood? This ribose is the sugar which is present in RNA molecules, right? It is present in RNA molecules. We will come to this later in nucleic acid. We will study about this also, right? But you need to remember this. And there is one more sugar in aldopentose. There is one more sugar in aldopentose, right? Observe this structure of ribose sugar. Here there are 5 carbon atoms at second carbon at first carbon double bond O is there, and at every other carbon hydroxy group is there, right? Hydroxyl group is there. If I omit out this hydroxyl group from second carbon, then then what will occur here? Here hydroxyl group is removed, so oxygen is removed here and only hydrogen is present over there, right? Hydrogen will be present over there. That's why this ribose sugar can be called as deoxyribose sugar. Understood? And nucleic acid which is having deoxyribose instead of ribose sugar is called DNA. That is deoxyribonucleic acid, the magical molecule, right? Magical molecule. Why it is called magical molecule? That will come later. Some of you might be knowing why it is called magical molecule. Why I am calling it is
as magical molecule, right? It is not called magical molecule, but I am calling it magical molecule, right? So if that oxygen is removed from ribose sugar, second carbon hydroxyl group is there, that O, if it is omitted out, then that kind of ribose is called deoxyribose, right? And this deoxyribose is present in place of ribose sugar in DNA molecule, right? In RNA molecule, ribose sugar is there, and if this ribose sugar is, instead of this ribose sugar, deoxyribose sugar is present, then that kind of molecule is called DNA molecule. Understood? Okay, so this kind of molecule is ribose and deoxyribose. Again, ribose, we are saying acyclic structure, right? We are saying non-cyclic structure here. They have cyclic structure as well, where first carbon have bonding with O and the same oxygen is forming bond with fourth carbon, right? First carbon of ribose sugar is forming, first carbon having bond with oxygen and same oxygen have bonding with fourth carbon as well. Understood? And that's how it is forming pentose structure. It is forming pentose structure. It is also called as ribose furanose, right? It is also called as ribofuranose structure, right? You can see pentose structure of it, right? Pentagon structure of it. So that kind of structure is there in RNA or DNA. For DNA, again, one oxygen deficient is there, but same kind of furanous structure it is forming in DNA molecule, right? Ribulose is not participating in nucleic acids. We have two types of sugar in nucleic acids, that is ribose and deoxyribose. Okay, so this is about pentose sugar. Let's come to the hexose sugar. Hexose sugar, there are various types of hexose sugar, but again, main there are two types of hexose sugar, that is aldohexose and ketohexose. Common name of aldohexose is very common to you. You must have heard it name. It is called, its common name is glucose. Its common name is glucose, right? And the ketohexose, which is having ketone group, which is having double bond O at the second carbon, is called fructose. It is called fructose, right? Which can be found in higher amount in honey. Understood? It is present in higher amount in honey. So this is about different type of aldohexose and ketohexose, right? In aldohexose, the double bond O is present at the first carbon, terminal carbon. That's why it is called aldohexose, aldehyde. And here it is present at the second carbon. That's why it is called ketohexose, right? Non-terminal carbon. That's why it is called ketohexose. Glucose and fructose. Glucose and fructose, right? So this, in this way, these two type of molecules are there. Okay, now coming to the next is, now if we see this aldohexose also even, then there will be several type of aldohexose. It means they are having aldehyde group, they are having 6 carbon atom, still there are several different type of aldohexose in them, right? If you have observed structure of glucose and fructose very carefully, you might have observed that in third carbon OH group is present at the another side, right? In every carbon, in every other carbon atom, OH group is present at the right hand side, and in one carbon, that is third carbon, OH group is present at the left hand side, right? So in all the aldohexose and ketohexose, this third carbon is present at the left hand side, right? Now, but in galactose, fourth carbon atom, OH group is also present at the left hand side. Remaining, that means in galactose, third and fourth carbon have hydroxyl group at the left hand side, and remaining all hydroxyl group at the right hand side. Understood? Now, so this is the difference between glucose molecule and galactose molecule, right? There is one more molecule called mannose, in which hydroxyl group of second carbon and third carbon is present at the left hand side. It seems like galactose and mannose wants different identity from glucose, right? वो लोग को अलग आइडेंटिटी चाहिए, भाई हम लोग ग्लूकोज जैसे क्यों बने, हम लोग में से कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना ग्लूकोज से. तो वो लोग ने ऐसा सोच लिया, चलो थर्ड कार्बन का तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सभी में लेफ्ट हैंड साइड में है ही, तो गैलेक्टोज ने और मैनोस ने मिलके कॉन्स्पिरेसी किया, चलो तुम चुपचाप सेकंड कार्बन का ऐसा कर दो, मैं फोर्थ कार्बन का ऐसा करता हूँ, ठीक है. तो गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन वहां पर चला गया, मैनोस का सेकंड कार्बन वहां पर चला गया. सबके थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वहां पर है ही, लेकिन गैलेक्टोज का अलग से और एक OH भी चला गया और मैनोस का भी चला गया. अंडरस्टूड? So third carbon का OH group left hand side में, that is common in every type of hexose, but
मैनोज में सेकेंड कार्बन में भी है और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में भी है। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना है, ये हम लोग भूलेंगे नहीं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, ये सारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यू विल स्टडी अबाउट बायोमोलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री एज वेल। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप ये चैप्टर 11 बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री में भी आपको अच्छा ऐसा आएगा। आपको केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे, राइट? दैट्स व्हाई मैथ स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? ओके, तो यू आर हैविंग एडवांटेज ऑफ दिस। आपका एक डिसएडवांटेज है भाई कि मैथ्स नहीं तो फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडवांटेज ले लो, ठीक है? चलो, अभी ये हो गया, यहाँ पर ये हम लोग ने समझ लिया, ठीक है? दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज डिफरेंट, आई मीन दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स। चलो, और एक चीज रह गई है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज ऑल्सो फॉर्मिंग। यहां पर हम लोग ने जितने भी हेक्सोस के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बट व्हेन दे आर फॉर्मिंग डाइसैकराइड्स और व्हेन दे आर फॉर्मिंग पॉलीसैकराइड्स, they are in their cyclic structure, ठीक है? जब भी ये डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड बनते हैं तब ये अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर मोनोमर हो जाते हैं और ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के लंबा पॉलीमर मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट? और डाइसैकराइड में भी दो मोनोमर्स जुड़ते हैं, तो टू मोनोमर्स आर इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? यहां पर क्या होता है, यहां पर भी राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर की तरह, लेकिन उसमें 5 कार्बन थे, तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन था, राइट? यहां पर 6 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगा और यहां पर इस तरीके से हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? हियर हेक्सागोन स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। अंडरस्टूड? So this kind of structure is forming over here and this structure is called, अगर ग्लूकोज में बनता है तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? This structure is called glucopyranose. Understood? If this kind of structure, if क्यों ये बनता ही है, ठीक है? जब भी डाइसैकराइड बनाना है या पॉलीसैकराइड बनाना है, ऑलिगोसैकराइड भी बनाना है, even whatever we want to form except monosaccharide, then this glucose or this hexose have to become furanose or pyranose structure, right? So this is about pyranose, मतलब एक में पेंटागोन है और दूसरे में हेक्सागोन है। आपको इतने डिटेल में याद रखने का जरूरत नहीं है, बट लेकिन आप समझ लो सिर्फ कि ये सब में है क्या, है? एक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब वो मोनोमर के फॉर्म में होता है तब एट दैट टाइम दे आर इन द नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, बट व्हेन दे हैव टू फॉर्म डाइमर और व्हेन दे हैव टू फॉर्म पॉलीमर, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, देन ओनली दे कैन फॉर्म डाइमर्स और पॉलीमर्स। सो दिस इज अबाउट मोनोसैकराइड। अंडरस्टूड? चलो, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं डाइसैकराइड्स के बारे में भी। तो डाइसैकराइड्स हम लोग यहाँ पर 3 तरीके के 3 अलग अलग डाइसैकराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये शुगर होते कहां पर है, राइट? तो चलो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माल्टोस, ठीक है? माल्टोस इज अ डाइमर विच इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकराइड्स, that is and both the monosaccharides are glucose molecules, so it is made up of glucose plus glucose। तो दो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिलके माल्टोस बनाते हैं, ठीक है? लिंकेज अभी डिस्कस नहीं करना है राइट नाउ, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है? तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाते हैं, राइट, इट इज कॉल्ड अल्फा 1,4 लिंकेज, राइट? इट इज कॉल्ड अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है? क्योंकि एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बन रहा है, और ये बॉन्डिंग जब बनेगा तो एक मॉलिक्यूल में से H निकलता है, दूसरे मॉलिक्यूल में से OH निकलता है, और ये H और OH निकल के H2O बन जाता है, राइट? H plus OH becomes H2O. So one water molecule comes out during dimerization of 2 monomers. Understood? तो इस तरीके से अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है बिटवीन अल्फा या बीटा भी रहने देते हैं, 1,4 लिंकेज बनता है बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एंड दिस फॉर्मेशन, आई मीन दिस लिंकेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज, ठीक है? चलो, अभी दूसरा देख लेते हैं। अभी देखते हैं लैक्टोज कैसे बनता है। अब
माल्टोज का मैं अकरेंस आपको बताना भूल गया, राइट। तो माल्टोज कहां पर होता है, जब हम लोग स्टार्च वाला कोई भी खाना खाते हैं, जैसे राइस है, इसमें स्टार्च होता है, राइस है, फिर व्हीट है, जितने भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स आर मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्च, राइट। और भी पल्सेस में भी कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च तो होता ही है, ठीक है, ज्यादा होता है स्टार्च का अमाउंट। सारे फूड जितने भी खाते हैं लगभग सब में स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होता है, राइट। दिस स्टार्च इज नथिंग बट पॉलीमर। ये पॉलीमर का जब डाइजेशन होता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर फॉर्मिंग डाइमर्स, और ये डाइमर्स और कोई नहीं माल्टोज है, ठीक है। सो बाय डाइजेशन, बाय पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, maltose is forming within our alimentary canal only, understood, and this dimer is nothing but maltose, ठीक है। तो ऐसे बनता है माल्टोज हमारे बॉडी के अंदर, फिर माल्टोज का भी डाइजेशन होकर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो माल्टोज ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है अपने बॉडी में। ओके, सो दिस इज अबाउट माल्टोज। अब दूसरा देख लेते हैं लैक्टोज। आपको पता चल गया होगा कि लैक्टोज तो कहां पर है, बहुत लोगों को मालूम होगा ऑलरेडी पहले से कि लैक्टोज इज प्रेजेंट। लैक्टोज इज नथिंग बट मिल्क शुगर। मिल्क में एक शुगर होता है, दैट इज लैक्टोज। मिल्क, वो लैक्टोज होगी स्वीट, उसका स्वीटनेस बहुत कम है, हाँ, इसलिए मिल्क इतना स्वीट नहीं लगता है लैक्टोज शुगर की वजह से, राइट। सबसे ज्यादा स्वीटनेस होता है फ्रुक्टोज का, आई थिंक फ्रुक्टोज का होता है, फिर सुक्रोज का होता है, ठीक है। सुक्रोज हम लोग सुक्रोज का बात में बोलता हूं, चलो। Lactose is a milk sugar and lactose is a sugar which is dimer and is consisting of glucose and galactose, ठीक है। दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स होते हैं, दो अलग अलग हेक्सोस है, दो अलग अलग एल्डोहेक्सोस है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, गैलेक्टोज में थर्ड प्लस फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होता है, इट इज फॉर्मिंग लैक्टोज शुगर, इट इज फॉर्मिंग लैक्टोज शुगर, अंडरस्टूड। यहां पर भी H2O मॉलिक्यूल का इवॉल्व होता है, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ये डाइमराइजेशन के टाइम पे देयर इज इवॉल्व ऑफ H2O molecule, understood. So this kind of dimerization is occurring between glucose and galactose, which lead to formation of lactose molecule, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट डाइमर में। दिस डाइमर इज कॉल्ड सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग चम्मच से डाल के चाय में या खाने में डालते हैं, ऑल दैट इज सुक्रोज, ठीक है। अगर वो प्योरिफाइड फॉर्म में है तो इट इज नथिंग बट सुक्रोज ओनली, अंडरस्टूड। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सुक्रोज मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग बाय डाइमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि भाई माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में तीनों में एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो है ही, ठीक है। लेकिन माल्टोज में दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज है, लैक्टोज में दूसरा मॉलिक्यूल गैलेक्टोज है, और यहां पर सुक्रोज में दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज है। तो यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये एल्डोहेक्सोस प्लस कीटोहेक्सोस, ठीक है। ये दोनों शुगर, एक का कार्बोनिल स्ट्रक्चर होता है, दूसरे का फ्यूराइल स्ट्रक्चर होता है। ये दो स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, अगेन विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक मोनोसैकेराइड में से H निकलेगा, दूसरा मोनोसैकेराइड से OH निकलेगा। दिस H and OH together form water molecule, and these two monosaccharides will form disaccharide, which is called as sugar, right? Or sucrose, which is also called as table sugar. It is also called as invert sugar, ठीक है। invert sugar क्यों बोलते हैं, अभी इतना ध्यान रखने की, अभी इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। So this is about disaccharide. About disaccharide, we don't have disaccharide topic in our syllabus. लेकिन ठीक है, हम लोग ने पढ़ लिया, इतना थोड़ा सा समझ लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, तो आपको स्टार्च समझने भी इजी होगा, राइट, बिकॉज स्टार्च इज देयर इन आवर सिलेबस। सो दिस इज अबाउट डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। Polysaccharides are nothing but polymers of monosaccharides, right? They are having multiple repeated numbers, that they are having repeated units in 100 to thousands of numbers, right? And these repeated units are nothing but, most of the time it is glucose molecule, that is, if we see starch molecule, if we see glycogen molecule, then cellulose molecule, these molecules are consisting of glucose only, right? They are homopolymers of
glucose. You know difference between homopolymer and heteropolymer, right? Homopolymer means which are having only one type of monomer, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर है उसको होमोपोलीमर बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर होते हैं उसको हेटेरोपोलीमर बोलते हैं, राइट? तो अभी मैंने जितने नाम बोले ना, I mean cellulose, starch, then this glycogen, और एक नाम बोलता हूँ इन्यूलिन, राइट? इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन, not insulin. All these polysaccharides are homopolymers. All these polysaccharides are homopolymers. That means they are having only single type of subunit, only single type of not subunit but monomeric unit in them, right? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेलुलोज के बारे में, right? In cellulose there is beta-1,4 linkage between glucose molecules, right? हर दो consecutive glucose molecule के बीच में beta-1,4 linkage होता है और ऐसे लंबा चेन बनता है, right? What is beta and what is alpha? ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपको याद रखना नहीं है तो याद मत भी रखो, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर राइट नाउ. तो यहाँ पर 1,4 लिंकेज होता है, दैट इज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन, तो फोर्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में लिंकेज है. फिर ये ये अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है तो उसका फर्स्ट कार्बन, राइट हैंड साइड वाला कार्बन है तो उसका फोर्थ कार्बन, फिर इसका फर्स्ट कार्बन के साथ इसके फोर्थ कार्बन का, फिर इसके फर्स्ट कार्बन के साथ इसके फोर्थ कार्बन का, ऐसे एक लंबा चेन बनता है, राइट? एंड इफ दे सी दिस मॉलिक्यूल्स इन माइक्रोस्कोप दे सीम्स लाइक दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट? और ये बनाते भी फाइबर्स ही है, देखो सेलुलोज इज अ फाइबर, राइट? सेलुलोज से कॉटन फाइबर बनता है, आई मीन कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. पेपर ऑल्सो, पेपर दैट वी इन विच वी आर राइटिंग रीडिंग, उसमें भी सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, अंडरस्टूड? सो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर, अंडरस्टूड? प्लांट्स में सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है, राइट? सो सेलुलोज इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट? उसमें कौन सा मोनोमर होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, राइट? और लिंकेज कौन सा होता है? बीटा-1,4 लिंकेज, अंडरस्टूड? अब आते हैं इन्यूलिन के बारे में. इन्यूलिन में आते हैं, ठीक है? इन्यूलिन इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल. किसका होमोपॉलीमर है? फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का, ठीक है? इसमें फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल एज अ रिपीटिंग यूनिट और रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एंड्स होते हैं, ठीक है? एक रिड्यूसिंग एंड होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है. अब जो राइट हैंड साइड वाला एंड है उसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, ठीक है? अगर आपको देखो इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि R फॉर राइट हैंड साइड, R फॉर रिड्यूसिंग, अंडरस्टूड? और दूसरा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है? तो एक का पता चलेगा तो दूसरा का पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इन्यूलिन इज सच टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड which is having one end reducing and another end non-reducing, understood? So this is about inulin. चलो दूसरे पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर हम लोग होमोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो दो टाइप के स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है? सेलुलोज जो हम लोग ने पढ़ा दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. अब हम लोग स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है? स्टार्च ऐसा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, आई मीन सॉरी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है. This polysaccharide is consisting again of two molecules, right? That is amylose and amylopectin. स्टार्च में ज्यादातर amylose होता है, almost 80% amylose होता है, 20% amylopectin होता है. अब amylose क्या है? तो amylose ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है, ऐसा पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ अल्फा-1,4 लिंकेज है. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अल्फा-1,4 लिंकेज. तो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक सीधा स्ट्रेट चेन है, अंडरस्टूड? और अमाइलोपेक्टिन ऐसा शुगर है जिसमें इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें अल्फा-1,4 लिंकेज तो होता ही है, एक स्ट्रेट चेन तो होता ही है, लेकिन उसमें बीच बीच में कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अल्फा-1,6 लिंकेज भी होता है, कोई दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अल्फा-1,6 लिंकेज भी होता है, और इस वजह से इसमें ब्रांचिंग आ जाता है, ठीक है? अगर इसका आप लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी इट सीम्स लाइक इट इज हैविंग ब्रांचिंग. तो एक लंबा चेन है जिसमें सारे अल्फा-1,4 लिंकेज है और बीच में से अल्फा-1,6 लिंकेज बनके एक दूसरा चेन भी निकल रहा है, ठीक है? जिसमें और बाकी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में अल्फा-1,4 लिंकेज है, लेकिन इसका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इसका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में अल्फा-1,6 लिंकेज है, understood? So इसमें ये amylopectin is having branched structure, amylose is non-branched chain like structure,
अंडरस्टूड, दोनों ही मॉलिक्यूल है। स्टार्च में अमाइलोस 80% होता है, अमाइलोपेक्टिन अराउंड 20% होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टार्च, आई मीन ऑफ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन इन स्टार्च, ठीक है। ऐसा और एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इन एनिमल्स, अंडरस्टूड, इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। तो स्टार्च प्लांट्स में मिलता है, दिस ग्लाइकोजेन कैन बी फाउंड इन एनिमल्स, राइट। ग्लाइकोजेन कैन बी नहीं, ग्लाइकोजेन फाउंड इन एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है। इवन हमारे लीवर में भी ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है, एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलो अब स्टार्च में फिर से आ जाते हैं। ग्लाइकोजेन के बारे में इतना नहीं है, लेकिन स्टार्च में सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आर देयर, राइट। स्टार्च का अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जो उसका चेन जैसा स्ट्रक्चर है वो। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉर्म में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल के अंदर कौन सा शेप है ये मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक थ्रेड जैसे एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, ये या फिर ये मॉलिक्यूल कर्व हो जाता है, क्या बनता है, अंडरस्टूड। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। यहां पर सेकेंडरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च कैसा होता है, हेलिकल होता है, ठीक है। मतलब एक मान लो कि आपने अल्फा 1,4 लिंकेज लगा के एक लंबा चेन तो बना दिया, ठीक है। अब ये लंबा चेन आप स्प्रिंग जैसा कर दो, अंडरस्टूड, तो दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। तो दिस हेलिकल, आई मीन स्टार्च इज हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी जैसा तैसा नहीं है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर आयोडीन मॉलिक्यूल आ जाए तो फंस जाता है बेचारा, अंडरस्टूड। आयोडीन मॉलिक्यूल होता है ब्राउन, ऑरेंज से ब्राउन कलर का होता है, और ये अपना स्टार्च मॉलिक्यूल होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इसका कलर नहीं होता है, लेकिन ये वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका व्हाइट कलर दिखता है। अगर पानी में अच्छे से कोई भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है तो वो कलरलेस, ओपेक हो जाता है, आई मीन सॉरी ट्रांसपेरेंट हो जाता है एटलीस्ट। लेकिन ये पानी में सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाता है, इसकी वजह से स्टार्च मॉलिक्यूल इज हैविंग व्हाइट कलर, राइट। इट इज ओपेक, स्टार्च सॉल्यूशन इज ओपेक सॉल्यूशन, राइट। तो इसलिए इसका व्हाइट कलर बन जाता है। तो ये व्हाइट कलर में अभी क्या होता है, देखो यहाँ पर कि हेलिकल व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर मिक्स करो या ब्राउन कलर मिक्स करो तो लाइट शेड बनना चाहिए ना, लेकिन होता क्या है मालूम है, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर बन जाता है, राइट। आयोडीन में जब हम लोग स्टार्च डालते हैं तो इट इज फॉर्मिंग डार्क ब्लू कलर, ठीक है। ज्यादा गलती से पड़ गया ना तो एकदम ब्लैक जैसा डार्क ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर एकदम हल्का डालते हैं ना तो पर्पल कलर दिखता है, अंडरस्टूड। तो ये आयोडीन क्यों ऐसा फॉर्म करता है, दैट इज, उसका रीजन ये है कि इसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना स्टार्च का, उसमें आयोडीन एंट्रैप हो जाता है, बेचारा फंस जाता है, और यहाँ पर जो केमिकल नेचर है ना स्टार्च का वो बदल जाता है, ठीक है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स का, सिर्फ स्टार्च का नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स का, मींस स्टार्च प्लस आयोडीन टुगेदर इट इज हैविंग सम डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज शोइंग सम डिफरेंट सब एटॉमिक प्रॉपर्टी, और उसके वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर फॉर्मेशन को, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब इसका कलर कौन सा होता है, पर्पल टू डार्क ब्लू कलर, अंडरस्टूड। तो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो है सारे होमोपॉलीमर्स हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत अलग तरीके के, बहुत सारे अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें सिंपल मोनोसैकेराइड्स नहीं होते हैं। सिंपल मोनोसैकेराइड्स मींस यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स सिर्फ हेक्सोस या पेंटोस ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हेक्सोस मॉलिक्यूल के साथ कोई एमिनो एसिड बाइंड है और उसका पॉलीमर है, अंडरस्टूड। तो दैट काइंड ऑफ कंपाउंड आर मतलब कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड का पॉलीमर बन रहा है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोजामाइड है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइड है, अंडरस्टूड। ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है और इसके पॉलीसैकेराइड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, काइटिन। अब ये काइटिन क्या है, तो फंगस के सेल वॉल में काइटिन मिलता है, इंसेक्ट्स के बॉडी में काइटिन मिलता है एज एन एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर देयर बॉडी, ये एक्सोस्केलेटन मिलता है। दिस एक्सोस्केलेटन इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। यहाँ पर ग्लूकोज शुगर के साथ एक एमिनो एसिड लिंक होता है, और ऐसे मोनोमर्स एक लंबे चेन में होते हैं, दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीसैकेराइड, अंडरस्टूड। सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज काइटिन मॉलिक्यूल. So this is about polysaccharide, and right now we have finished with different type of carbohydrates, and so we have finished the topic carbohydrates. In next video we will study about
लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग then we will study about fat molecules and nucleic acids। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, we will study about lipid molecules, amino acid molecules and protein molecules। Understood? So for right now, goodbye everybody।